आइए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल फॉर्मूले, a very important concept. Without this we cannot move ahead, and without this chemistry is not possible. Without this we cannot learn chemistry, और चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और 10th क्लास में विल फेस प्रॉब्लम अगर हमें ये वाला पोर्शन अच्छे से नहीं आता. तो द टॉपिक नेम इज केमिकल फॉर्मूले. Students, first of all, let us see the definition of chemical formulae. So students, chemical formulae of a compound, chemical formula of a compound is the symbolic representation of its composition. For example, chemical formula for compound for sodium chloride is NaCl. Similarly, students, chemical formula for, say, magnesium oxide is MgO. Right, students? तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl जो है वो NaCl कैसे बना. ये जितने भी कंपाउंड्स हम देखते आए हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में या फर्दर देखेंगे, तो व्हाट इज द पैटर्न, ये कैसे बनते हैं, और ये क्लास लगाने के बाद आप खुद भी इन फॉर्मूलाज को बना पाएंगे जिनको आप अभी तक सिर्फ लर्न करते थे. राइट स्टूडेंट्स? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ रूल्स सीखने होंगे इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला को बनाने के. तो रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूले. राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, these are few rules written in your NCERT, right? You can read these rules. Slowly we'll be discussing these rules when we discuss the examples of writing the chemical formula. So by using these rules we can write the chemical formula of a compound. और केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए इन रूल्स के अलावा हमें पिछली क्लास का भी काम साथ में याद होना चाहिए, दैट इज द नेम एंड द सिंबल्स ऑफ सम आयंस. स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है, दिस टेबल is very helpful for today's lecture. I will tell you by taking few examples how to use this table, and by using rules how can we make a chemical formula of a given compound. मतलब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, वो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इन एग्जांपल्स के लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी. राइट स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें एक चीज जाननी चाहिए कि when it is written that Na plus, it means plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. And when it is written that H minus, it is minus 1, minus 1 and minus 1. Right, students? And this number 1, this if I say it is written at plus 1, तो this number 1 is called valency. और हम इस वैलेंसी को ही यूज करेंगे यहाँ पे. कैसे यूज करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ एक दो एग्जांपल से, वहां से आपको सारी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी. लेट अस सी. फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर, से, सोडियम क्लोराइड. राइट स्टूडेंट्स? तो सोडियम क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, यहां से सोडियम सिंबल Na and chlorine. What is the valency of sodium? You have to check this table. तो सोडियम की वैलेंसी +1, लेकिन we will write number only. क्लोरीन ये यहाँ है, it is -1, तो we will write number only. Next step, ये जो है 1, ये सबस्क्रिप्ट है. सबस्क्रिप्ट क्या होता है, like X, 2 and 2. This is called subscript and this is called superscript. Right students? तो ये जो 1 है, this is
subscript. तो it will be Na1Cl1. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं. 1 अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे NaCl. दिस इज हाउ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl हो सकता है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1. सल्फाइड, so this is sulfide. See, 2 is written over here. 2. Now, what will happen? H2S1, but we will write H2S only. Right, students? Similarly, if I talk about sodium oxide, it is Na1 oxide. Oxide, this is oxide. Sorry, 2. It will be Na2O. Right, students? आगे चलते हैं. When we talk about aluminium oxide, so aluminium valency, this is aluminium, its valency is 3. Oxide, अभी हमने देखा ऑक्साइड की वैलेंसी, ये रहा ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी है 2. Al2O3. राइट स्टूडेंट्स? सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल्स देखें, तो इफ आई से जिंक क्लोराइड, तो इट इज नथिंग बट जिंक. यहाँ पे जिंक का फॉर्मूला, जिंक का सिंबल Zn2 पॉजिटिव, दिस इज द सिंबल, तो Zn और 2. क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, Cl1, so it is ZnCl2. Right, students? Similarly, calcium chloride. So where is calcium? You can identify calcium. This is calcium. So, and chloride, you can identify chloride. This is chloride. Right, students? Let us move forward. यहां से हम दूसरी कुछ टाइप को चेंज करते हैं. क्या चेंज करते हैं? लेट अस सी. इफ आई से कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम फाइंड आउट करें हम. दिस इज कैल्शियम, इट इज +2, एंड ऑक्साइड इज हियर, इट इज -2, दिस इज 2. नाउ स्टूडेंट्स, क्या करना है? ये 2 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा. लेकिन इससे पहले, बिकॉज इट इज 2 and 2, since we say that there is a ratio of these atoms in every compound, it is the ratio, 1:2, 1:2, 3:2. अब यहाँ पे रेशो में जब 2:2 है, तो यहाँ पे रेशो होने के कारण कैन वी से इट इज 1:1. कैसे लिखना, कैसे है वो मैं बताता हूँ. 2 2, तो यहाँ से लिखेंगे, तो ये आएगा Ca2O2. लेकिन स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने. देयर इज अ रूल रिगार्डिंग दिस. लेट अस सी. सो दिस रूल इज नॉट मेंशन्ड हियर. आई टेल यू द रूल, कि अगर यहाँ पे दोनों एटम्स, दोनों नंबर सेम जैसे हों या मल्टीपल हों, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं. सो द आंसर वुड बी CaO. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता 2 और 4, तो हम क्या बनाते? 1 और 2. कैसे? वो भी आप आगे एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें आप देखोगे. जैसा कि हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम. ऑक्साइड, दिस इज अगेन ऑक्साइड. सो द सेम थिंग हैपेंस हियर. Then we will write MgO only.
Okay, students. So this is, you can say, type 2 questions which can be asked in your school exam. तो यहाँ पे this is type 2 and this is type 1 questions. Another section, students, here is type 3 questions, polyatomic ions जिसके अंदर होंगे, वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टूडेंट्स, अब क्या है हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड, and sodium, here it is sodium, this is hydroxide, and hydroxide is nothing but polyatomic ion. So whenever we write a polyatomic ion, we use bracket. For example, Na and OH, it is 1, it is 1, so a bracket, यहाँ पे Na और यहाँ पे OH, so it will be Na1 OH1, which is nothing but NaOH, because it is 1, so we can open the bracket also, NaOH. Right, students? Similarly, when we talk about potassium hydroxide, it will be potassium 1, hydroxide अभी हमने देखा 1, it will be KOH. Students, if we talk about calcium hydroxide, so it is calcium, it is OH 1, 2 और यहाँ 1, so it should be, and further it should be like this one. That is why this bracket is necessary. We can remove this bracket when there is 1, but we cannot remove this bracket when there is 2. Right, students? Let us see few more examples based on this polyatomic ions. क्योंकि ये जो टॉपिक है polyatomic ions का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. Let us take one more example, that is sodium nitrate. तो सोडियम तो अब आपको याद हो गया होगा, Na1, and nitrate, this is nitrate, it is polyatomic, so NO3 1, it will be what, NaNO3. जितने भी स्टूडेंट्स इस कॉलम में, अगर कोई आपको केमिकल फॉर्मूला में इस कॉलम में से कोई आयन आता है, तो यू हैव टू कीप इट इन ब्रैकेट. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम और देखें तो सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट, राइट, कार्बोनेट, सोडियम अब आपको याद हो गया होगा 1, CO3 2, तो Na2CO3. ओके, आगे देखते हैं एक अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. तो स्टूडेंट्स, अमोनियम, दिस इज अमोनियम, and here it is sulfate. Right, students? So 2 or 1, it will be NH4 whole twice SO4, ammonium sulfate. Right, students? Let us see one more, that is ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, so it is ammonium, say this one, and hydroxide, say this, so it will be NH4OH. Similarly, if we talk about aluminium sulfate, so aluminium 3 sulfate 2, it will be Al2SO4 whole thrice. Right, students? इसके अलावा स्टूडेंट्स और किस तरह का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है? अब आप इतना करने के बाद जब आप इन रूल्स को पढ़ोगे तो आपको ये रूल्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि हमने देखा कि केमिकल नेम से केमिकल कंपाउंड बनाना है, तो केमिकल नेम टू केमिकल कंपाउंड, वो हम लोग देख चुके हैं ऊपर एग्जांपल्स में. अगर आपको आ जाता है केमिकल फॉर्मूला या कंपाउंड टू केमिकल नेम,
तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CaCl2, तो स्टूडेंट्स अब ऊपर वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो गया होगा कि दिस इज Ca कैल्शियम एंड दिस इज क्लोराइड, राइट। सिमिलरली इफ K2SO4, तो अब आपको समझ आ गया है दिस इज पोटेशियम एंड दिस इज सल्फेट, तो दोनों को इकट्ठा रखें, पोटेशियम सल्फेट। Similarly, if I talk about KNO3, so it is potassium nitrate, CaCO3, calcium carbonate, NaCl, sodium chloride. Right, students? So this was all about today's lecture. In the next class, we'll be discussing about mole concepts and atomic masses.